हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे। AKTU 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है ये सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे लास्ट वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए थे, राइट। ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज ओपन एट द टॉप हैज अ कैपेसिटी 32, यानी कि ये आपको क्या दे दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। क्यूबिक फीट डिटरमाइन यूजिंग लैग्रांज मेथड। लैग्रांज मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स सच दैट द लिस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉक्स। चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द डायमेंशन of the box are x, y and z, then the required material function, then the list material is f of x, y, z is equal to xy plus 2yz plus 2zx। देखिए ये ऊपर से खाली है बॉक्स। कैसा आपका बॉक्स है, इस टाइप का आपका बॉक्स बनेगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ऊपर से खाली बॉक्स है, तो आपको एक्स वाई ये आपके डायरेक्शंस हो गए। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया और ये आपका z हो गया। ये बॉक्स सपोज कीजिए यहाँ से ओपन है, तो ये आपकी डायमेंशन होगी x, राइट। ये आपकी हो गई डायमेंशन z और ये डायमेंशन हो गया आपकी y, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो फंक्शन बनेगा, देखिए ये वाली साइड यहाँ पे नहीं है, ये वाली साइड आपकी नहीं है, तो ये किस किस डायरेक्शन में है, एक तो x और z। तो x और z इसमें केवल एक ही होगा, x z। बाकी इसमें x z तो एक होगा, नीचे वाला साइड वाला ये कौन कौन है, x और y। 2xy प्लस ये xy है, ये xy है, दैट इज 2xy। तो बॉटम हो गया बैक साइड आपकी बनेगी y और z, 2yz। ये आपका फंक्शन है, इसको आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो एक आपको कंडीशन दी हुई है, एंड कंडीशन आपकी दी हुई है कि वॉल्यूम जो है इसका 32 क्यूबिक फीट है। सो लेट दैट g of x, y, z is equal to volume minus 32 is equal to 0, that is g of x, y, z। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, x, y, z minus 32 is equal to 0। अब आपके पास 10 we have a function that is f of x, y, z
is equal to xz plus 2xy plus 2yz. That is called equation number 1. And a condition g of xyz is equal to xyz minus 32 is equal to 0 is equation number 2. ये आपको अब आपको लैग्रांज मेथड सोल्व करना है. Now differentiating differentiate f of x y z with respect to x y and z respectively, right? That is f of x is equal to del f over del x is equal to z plus 2y and f of y del f over del y, that is 2x. 2x ये 0 हो गया, ये 2y बचा, 2x बचा और यहाँ बचा 2z. And f of z is equal to del f over del z. Del f over del z, that is x प्लस ये बन गया 0, ये बन गया 2y. And and differentiate g of x y z with respect to x y and z respectively. That is g of x del g over del x, g of y is equal to del g over del y, g of z is equal to del g over del z. That is differentiating with respect to x, yz बचेगा, ये बचेगा yz, xz and xy. Therefore, by Lagrange method use Lagrange constant lambda fx plus lambda gx is equal to 0, fy plus lambda gy is equal to 0, fz plus lambda gz is equal to 0. For what is fx? Fx is z plus 2y, z plus 2y, z plus 2y, 2x plus 2z, 2x plus 2z, x plus 2y, x plus 2y plus lambda lambda lambda, that is gx. Gx is yz, gy is xz and gz is xy is equal to 0, or it can be taken as, or lambda is equal to negative z plus 2y over yz, lambda is equal to negative 2x plus 2z over xz, and lambda is equal to
negative x plus 2y over xy. That is called equation number 3, 4 and 5. Now comparing 3 and 4. Comparing 3 and 4. So we get negative z plus 2y over yz is equal to negative 2x plus 2z over xz. This implies cancel हो गए, z से z cancel हो गया, that is x into z plus 2y is equal to y into 2x plus 2z. This implies xz plus 2xy is equal to 2xy plus 2yz. This implies 2xy is cancelled. Xz is equal to 2yz. Therefore, x is equal to 2y. Now, comparing fourth and fifth. Fourth, what is fourth? Fourth is 2x plus 2z upon xz. Negative 2x plus 2z over xz is equal to x plus 2y over xy with negative sign. Cancelled x, that is y plus y into 2x plus 2z is equal to z x plus 2y. Therefore 2xy plus 2yz is equal to zx plus 2yz. This implies 2yz 2xy is equal to zx. This implies z is equal to 2y. Thus we have x is equal to 2y and 2y is equal to z, and hence we get x is equal to 2y and 2y is equal to z. Now let us take x is equal to 2y is equal to z is equal to some constant, say is a constant. This is a constant, right? So we get x is equal to k, y is equal to k by 2 and z is equal to k. Thus from given volume is equal to 32 cc, this implies x, y, z is equal to 32. Therefore k dot k by 2 dot k is equal to 32. This implies k cube is equal to 64. It can be written as 4 4 4, that is k is equal to 4. So we get x is equal to k is equal to 4 and y is equal to k by 2, that is 4 by 2, that is 2, and z is equal to k is equal to 2.
Thus, the dimension of, sorry, 4, तो 4 आएगा ना. Thus, yeah, hence the dimension, hence जो क्वेश्चन में लिखा वही लिख देंगे. Hence the dimension of the box such that least material is required for the construction is, thus the dimension of the required box are 2, 4 and 4. This is the required answer, right? You can take these dimensions are 4 to 2, yeah, 2, 4, 4, right? Thank you, students.